We have what is remote sensing. So remote sensing, it is the science where you will acquire knowledge about any object without being in contact with it. तो ତା ସହିତ physical contact ନ ହେଇକି ତୁମେ ଦୂରରୁ ତା ଠୁ information collect କରିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା କି କୌଣସି କି ତୁମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହଉ ଡ୍ରୋନ୍ ହଉ ଏସବୁ ୟୁଜ୍ କରିକି डिफरेंट तुम फोटोग्राफिक इनफॉरमेशन कलेक्ट करिया जो फोटो को एनालाइज करके हमें स्टडी करि परिया कोई जगह कौन अछि जोटा कि बहुत थोड़े टाइम सेविंग और गोटे पर्टिकुलर कम टाइम भितर तुम बड़ एरिया कवर कर पारे सो रिमोट सेंसिंग इज द साइंस टू acquire information about the earth surface without actually being in contact with it. So these are the stages of remote sensing, or you can say principle of remote sensing. So to study any object, you require first an energy source or a illumination, where you have to illuminate the object. So कि तुम्हें धर फोटो उठेला बेले कि जोठी दिन रे फोटो उठौछ सेठी तुमरो सनलाइट रोची बट रात्रि रे फोटो उठौछ तुमे मोबाइल फ्लैश यूज कर सो दोस आर कैन से कॉल्ड एज एनर्जी सोर्स बाय illumination. So radiation and the atmosphere, our interaction with the target, the recording energy by the sensor, then transmission, reception and processing, then interpreter analysis, then you have to apply that. So let's go on देखिए. So any object on the earth surface, तादरू जहाँ भी रे emit होतो, so that depends upon the type of object. So that is captured by the satellite. तो प्रोसेस प्रिंसिपल एमती हम कि फास्ट आम गोटे एनर्जी सोर्स थी जोटा आम नहीं पार सन को एनर्जी सोर्स सन रु जो रे आसो इट विल fall on the object but it has to travel through the atmosphere तो एटा atmosphere through रे travel करिए पड़िबो हला atmosphere travel करके then it will fall on the object so object ऊपर पड़िबो so when it will fall on the object then the object will reflect some of the energy so that is captured by the sensor. So the sun is the source of or energy source you can say or it is illuminate the object. The sun ru jo ray ase it travel through the atmosphere atmosphere through they travel karibo so atmosphere रे many particles asante so it will interact with the particle तो केतक ray को particle माने absorb करते हुए ताको deflect करिवे बा scatter करे देवे तो से अनुसार there will be disturbance when a ray traveling through the atmosphere move on the interaction with the atmosphere then when it will fall on the object the object over fall करियो ताले the object will absorb some ray it will transmit some ray and it will reflect some ray जो रे गुड़ा रिफ्लेक्ट करिवो that is useful in remote sensing so से रिफ्लेक्टेड रे को कैप्चर करिवो गुटे सेंसर तो जो गुटे सेंसर बा सैटेलाइट तमे कहि परिवो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर अछि तो सी कैप्चर करिवो से रे को सो जेतु डिफरेंट ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफरेंट so the different type of wavelength to absorb करने ट्रांसमिट करने और रिफ्लेक्ट करते से अनुसार हम ताको डिटेक्ट करि परिबा को टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेंसर जतरा रिसीव करिवो रिफ्लेक्टेड रे को ताको कोनसी गोटे स्पेस स्टेशन हो कि ग्राउंड बेस स्टेशन हो को पठे सेठी ताको गोटे फोटो रे कन्वर्ट करा तो तापर फोटो पाइला पर हम ताको अप्लाई तो दिस इज द मेन प्रिंसिपल पूरा एनर्जी सोर्स था ट्रैवल कर एटमॉस्फेयर तापर फॉल कर ऑब्जेक्ट ऊपर देन ऑब्जेक्ट टू रिफ्लेक्ट कर रिफ्लेक्ट कला पर ताको रिसीव करे गोटे सेंसर सेंसर पठेबा ताको गोटे स्टेशन स्पेस स्टेशन हो ग्राउंड बेस स्टेशन हो then they will analyze that process that they will convert it into a photograph then we can apply that photograph तो हमें जो एरिया रे फोटोग्राफ थो से फोटोग्राफ थ्रू रे हमें ताको स्टडी करबा से एरिया रे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करबा तो आपको से एरिया को जिबा को पड़बो ना First as energy source or illumination, so that is the first requirement. It has to illuminate the target. This energy
that come from the sun, the sun ray was here, that sun ray is called as the electromagnetic radiation. It consists of different rays, or like different wavelength of rays consist of electromagnetic radiation. So for remote sensing purpose, you use these type of ray: UV rays, visible ray, infrared ray, and microwave. So each सब use करा जाए remote sensing purpose में. You know gamma ray, X-ray, other purpose में use करा जाए, radio wave और broadcasting में use करते हैं. सेमती UV ray, visible, infrared और microwave हमें use करते हैं for remote sensing purpose. तो remote sensing है तुम्हारा electromagnetic radiation का होची main purpose कि जो target को eliminate करे. So electromagnetic radiation can be classified into two main groups. Those showing wave nature and particle nature. So सेट्टे electromagnetic radiation को हमें कौन करते हैं? It show dual nature. क्या कौन करे? Electromagnetic radiation का dual nature show करे. हम कहते wave nature और कहते particle nature. So wave nature है obviously move like a wave like this. The wave में move करे तो like it vibrates in all directions. But in particle nature, it consists of it consists of packets of energy जोटा कहते हैं क्वांटा कहते हैं. So light it shows both particle nature and wave nature. So electromagnetic wave it make by that it has both electrical property and magnetical property. So when wave nature है तार दीटा type of properties है ଗୋଟେ ଅଛି electrical property ଗୋଟେ ଅଛି magnetic property. And it shows both wavy nature and particle nature. So wave nature is wave type of travel करे and particle nature also it is consist of we can say packets of energy for the project quantum. This is the wave nature. We have electrical field and magnetic field. The electrical and magnetical field they will be perpendicular to each other. You can calculate velocity of the light from the frequency and wavelength that is equal to b to lambda. The particle nature जोटा कौन दिया quantum nature कौन दिया electromagnetic radiation का it is first explained by Max Planck. So the kit consists of numerous tiny individual particles or packets of energy that is called as photons or quanta. It is also a theory जोटा कि both nature देता है. So the energy of a photon equal to you can calculate by hv. V which is frequency, h which is Planck's constant. It is 6.62 into 10 to minus 34 joule. V which is frequency, you can calculate the frequency by from your velocity c equal to v lambda, you can calculate the frequency equal to c by lambda. So this means the photons of shorter wavelength. So जोटा shorter wavelength अच्छी और higher frequency अच्छी radiate greater energy than those of large wavelength. एनर्जी जଣା पड़छ जते छोट वेवलेंथ हवा एनर्जी इनवर्स ऑप्शन वेवलेंथ जते छोट वेवलेंथ हवा सेटा अधिक एनर्जी तार रहे. तो एक्सरे गामा रे एगला सब मेडिकल पर्पस यूज करा जाए. एगला तो मन रखो गामा रे एक्सरे अल्ट्रावायलेट विजिबल इंफ्रारेड रेडियो वेव्स. Visible omega 400 Newton meter or sorry, nanometer to 700 nanometer. और visible ray रा मोरा wavelength पूरा सब मन रखियो सेटा important हवा. Visible ray violet, blue, green, yellow, orange, red. अदर red, green, blue these are called as primary color. Red, green, blue तक को primary color है.
then comes to interaction with the atmosphere. So energy source ଯେତେବେଳେ ray emit କରିବ, then it has to travel through the atmosphere before it touch the earth surface. So before radiation used for remote sensing reaches the earth surface, it has to travel some distance through the atmosphere. So through atmosphere different particles हो gases हो, they can affect the incoming light. Suppose धरो कि हम कहते cloudy weather है तुम्हें sun दिख पाएगी because कि the cloud it blocks the radiation from the sun. तो sun ରୁ जहाँ radiation आसे ताको cloud block करे. So this because of this key the sun ray or the energy source it cannot reach to the earth surface, so we cannot do any remote sensing work. So this effect are caused by two mechanisms. One is called as scattering, one is called as absorption. So केतेक ray को कौन scatter कर दियते, केतेक absorb कर दियते. So what is atmospheric scattering? So scattering occurs when particles or large gas molecules present in the atmosphere interact with and cause the electromagnetic radiation to deviate from their path or redirected from its original path. जो पाथ रे पार्टिकल आसुनी यही पाथ रे आसीबा कथा एमाने कोन आको रिडायरेक्ट कर देबे, स्कैटर कर देबे, हैला. सो सो दैट कि इट कैन नॉट रीच टू द टारगेट और मोर अर्थ सरफेस को रीच करि परिबो नाही. So the two types of scattering, one is called as non-selective, another is called as a selective scattering. So it is depend upon the size of the atmospheric particle and wavelength of the electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation wavelength और तंकर particle size पर depend करे two type of scattering. Non-selective scattering. Non-selective scattering होची occur when scattering occurs when all wavelengths are equally scattered. सब wavelengths are equally scattered करे तब non-selective देखा. जो कि तुम्हें देखो white color cloud दिख पड़े जो, है ना, white color का दिख पड़े जो राम ये non-selective जो कुछ. During occur when the particles are much larger than the wavelength of the radiation. So the particle पर आपको बड़ा था than the wavelength of the radiation सेते बड़े हुए. It is caused by dust, cloud, fog. तो से सब केस रे मोरा नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग है. जो वाटर ड्रॉपलेट्स वाला लार्जर थांती है ना, लार्ज डस्ट पार्टिकल ये सब पार्टिकल पूरा मोरा नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग. तो सेठी बिकॉज़ ऑफ दिस नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग क्लाउड फॉग ये सब दे अपीयर व्हाइट. एटा जदि नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग ना होता था ताले तो माने व्हाइटर आसीबे कारण ये इक्वली सब उसको स्कैटर करे और सब रे जदि इक्वली स्कैटर हे जो ताला बेसिकली तमे जानछो जे एटा व्हाइटर देखा. सब जिनस जदि स्कैटर हे जो सेटा कोन देखा व्हाइट देखा. सब जिनस जदि ऑब्जर्व हे जो ताला सब ब्लैक देखा. So non-selectively basically particles are much larger than the wavelength of the radiation. जैसे कि ये particle involved which water droplets हो कि large dust particle हो cloud हो issue part तुम्हारा this type of scattering you can see. So because of that cloud and fog will appear white. तापर ऐसे तुम्हारा selective scattering. Selectively we have two types of scattering. One is Rayleigh scattering, one is BA scattering. So Rayleigh जोड़ा नॉन सिलेक्टिव रे कोन होला कि यदि पार्टिकल साइज लार्जर थिला ताले नॉन सिलेक्टिव हो. यदि पार्टिकल साइज स्मॉलर बा इक्वल थाए ताले सिलेक्टिव हो. So Rayleigh रे कोन particles are very small compared to the wavelength of the radiation. Particles are very small compared to the wavelength of the radiation. So it is also that's why it is also called as ना molecular scattering. बहुत छोटा पार्टिकल बा थाते हैला तो देखि वेवलेंथ छोटो थाते सेते तको कैन कंसीडर एज मॉलिक्यूल हैला. सो एठी तुमरा स्कैटरिंग जेते तुमर पार्टिकल छोटा हो सेते अधिक भल हो. ता सहित तुम जदि स्मॉलर वेवलेंथ अछि ताठू छोटो पार्टिकल अछि ताले वी कैन से देयर विल बी ग्रेटर Rayleigh scattering. Rayleigh scattering जो तुमरा स्काई टा ब्लू नले रेड कलर देखा जाय हैला. जदि
दिन बेले देखिबो कि ब्लू देखा तो ठीक सन सेट टाइम रे से सब ना देखा हुए रेड कलर है ना। ये ब्लू हो जापा शॉर्टर वेवलेंथ अभी ब्लू शॉर्टर वेवलेंथ तो ब्लू टा इजीली स्कैटर्ड हवा बाय रेली बेले बेले सन सेट टाइम रे कौन पे कि रे को अधिक टाइम एटमॉस्फेयर थ्रू ट्रैवल करे पड़े ब्लू स्कैटर है कि ग्रीन है कि येलो है कि रेड भी है तो रेड कलर भी दिखाए। So this resolution for blue color in the sky, huh? So the atmosphere नथा तो sky would just appear dark space. Sky जेहेतु atmosphere अच्छी ସେଠି ତମର ରେଲିକ୍ ସ୍କାଟରିଂ ହଉଛି ଆଉ ରେଲିକ୍ ସ୍କାଟରିଂ ଯୋଗୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହଉଛି କଣ ବ୍ଲୁ କଲର ସ୍କାଏ। So BA scattering it occurs when particles are spherical. Particle when spherical ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ BA scattering हुए and mostly they are same size. Wavelength ଆଉ particle जो involve ଥାନ୍ତି ସେମାନେ same size है ना। तो এটা basically तुम रखियो खाली these are occur in overcast condition, overcast atmospheric condition ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବର୍ଷା ଉଠାଏ କି ସେଇ ଟାଇମରେ produce ହୁଏ। ସେଠି ଖାଲି ମନେ ରଖିବା। So non selective ହଉଛି particle size greater than wavelength P is equal and Rayleigh ray smaller than the wavelength. When it comes to absorption, so absorption ଯଦି କେତେକ ପାର୍ଟିକଲ କରନ୍ତି କି they will absorb the ray ଯୋଉଟା ଆମର କି ଆମର sun ray ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଟାର୍ଗେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଟାର୍ଗେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିକି ପୁଣି ସେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଦେଇକି ଯିବ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଦେଇକି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସେତେବେଳେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ହଉ ତାପରେ ଓଜୋନ ତମର ୟୁଭି ରେ କୁ ପୁରା ଆବଜର୍ବ କରିଦିଏ ହଁ ତାପରେ ୱାଟର ଭେପର ଏବଂ ସବୁ रेडिएशन जो हुए तब ऑब्जर्व करो है ना। तो जब ऑब्जर्व करेंगे ताले the ray cannot reach to the sensor or cannot reach to the you can say object of the earth surface. So observation is also a problem जो है कि तुम्हारा the ray cannot reach to the target of interest. This comes to radiation and target detection जो रे गुरा ऑब्जर्व होगी जे गुरा you can say कि scattered होगी ସେମାନେ ଆସିକି କଣ କରେ ଟାର୍ଗେଟ ଉପରେ ଫଲ୍ କରେ ଟାର୍ଗେଟ ଉପରେ ଫଲ୍ କଲେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହବ କିଛିଟା ସେ ଆବଜର୍ଭ କରିଦବ କିଛିଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରିଦବ କିଛିଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦବ ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଟୁ थ्री पार्ट ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ଯେତିକି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଲା ଏନର୍ଜି ଯେତିକି ଆବଜର୍ଭ ହେଲା ଏନର୍ଜି ଯେତିକି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଲା ତ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟରେ ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ରେ ଯୋଉଗୁରା ଅଛି ଯୋଉଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବ ସେଇଗୁରା ଯାଇକି ସେନ୍ସର ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବ ବା ସେଠୁ ନେଇକି ଫଟୋଗ୍ରାଫ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବ। only our interest is the reflected ray. तो reflected ray को नहीं क्या हमें करेगा ये remote sensing part है more important part उसको ना reflected ray. Reflection दी प्रकार है परिवार वो तो specular reflection और वो diffusive reflection. Specular reflection कौन कि इनके incident है ना reflect है ना just like you can say Snell's law. Specular reflection it follows Snell's law. तो देखिए गोटे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई but diffusive reflection है reflection can reflect in a different direction में भी reflect है पर ताको हम diffusive जो multiple direction में reflect है ताले diffusive जो गोटे particular direction reflect है ताले specular तो specular reflection that follows the Snell's law so the Snell's law follow बुझबेला
ଯଦି ଯେତେବେଳେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାପରେ they will travel to the atmosphere again and they will capture by a sensor. So what is sensor? Typically the radiation reflected from the object the on surface are received by the sensor. So sensor कौन जोटा कि हमरो टारगेट इंटरेस्ट जोटा सरफेस रे थाउची सेटू सामने रे पड़ला रे जहां रिफ्लेक्ट होला सेटा को रिसीव करे तो रेडिएशन रिफ्लेक्टेड जहां रिसीव करे ताको है सेंसर तो सेंसर ऑलवेज पुट और यू कैन से प्लेस्ड in a platform है ना so in order to sensor in order for a sensor to collect record energy that is reflected or emitted from the target it must reside on a stable platform that हम कहते platforms so platform different type ର ଅଛି ground based platform କହିପାର like this is a ground based platform then this is a sensor just खाली एटा लेसर हाइट କୁ तुम कवर କରୁଛି so तुम्हारे से platform can be of three types ground based airborne space so ground based which तुम्हें handheld camera नहीं और race platform नहीं और कि crane नहीं और ऐसे कुछ ground based platform airborne वाले aeroplane हो helicopter हो hot air balloon हो कि airship हो कि tethered balloon सुता लगी तो जो बालीଯାତ୍ରା देखो जो advertise करानी सही type ର तापर space borne platform satellite ଆସିବ space satellites airborne अभी ना drone भी use करा होची है थोड़ा डिपेंड अपॉन देयर हाइट ग्राउंड बेस होची लेसर हाइट होची एयरबोर्न टिके तातो अधिक हाइट होची देन स्पेस होची सबटो अधिक हाइट होची तो एठी तुम्हारा प्लेटफॉर्म टा को प्लेस करा छै असी एनर्जी सब रिसीव करे तो सेंसर दिना टाइप रो छै one is passive sensor out होची एक्टिव सेंसर तो जेतेबेले तुम्हारा सन रे को हम यूज करछंती फॉर रिमोट सेंसिंग पर्पस बट इट कैन नॉट यूज इन क्लाउडी वेदर जो क्लाउडी वेदर हम यूज कर परिबा ना काना ताकर ओन सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जति नथिबो ताले तुमे सबले सन ऊपर फोकस करिया पड़ो जति क्लाउडी वेदर अछि ताले सन रे आसीबनी देन देयर विल बी नो रिमोट सेंसिंग सेते ताको बेस करके दीटा सेंसर हो जो पैसिव सेंसर और एक्टिव सेंसर पैसिव सेंसर ऑलवेज डिपेंड अपॉन द सन एनर्जी बट एक्टिव सेंसर हैज इट्स ओन illuminating power से नीचे रे पठेबो देन ऑब्जेक्ट रे बाडाले से नीचे रिसीव कर जेटा तुम एग्जांपल ले पारो राडार सर कोन एक्टिव राडार नीचे रे वेव पठाए से जो बाडे के आसीबो ताको नीचे रिसीव करियो तो इट डजंट डिपेंड अपॉन द अदर सोर्स तो एग्जांपल अछि हां then comes to image तो जते तुमरो फोटो जते तुम एनर्जी से रिसीव कला देन इट विल कन्वर्ट टू photographs so each photographs represented by digital format like there's a you can subdivide them into small equal size shaped area that one them pixel so एवरा सब फोटो रिप्रेजेंट करा जाए सपोज दिस इज अ फोटो तार डिफरेंट शेडिंग हम यूज करते टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट तो each setting को तुम्हें नंबर दे परियो डिजिटल नंबर दे परियो बाकी बीट को आते तो जो तुम्हारा डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेट्स आसीबो डिफरेंट ऑब्जेक्ट भितरे ताकू नै कि हमें डिफाइन करि परिबा बा डिस्टिंग्विश करि परिबा डिफरेंट ऑब्जेक्ट सो फोटोग्राफ के बड़ा स्टडी करा जाए तो फोटोग्राफ रे जते भलो पिक्सेल हितो सेते तुम्हें जूम करि कि बा सेते अधिक सेटिंग तमे देखि पाए